issue, then others can support. Okay. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Today we are going to focus our role in the curriculum development, and we all are the practicing teachers. We can give our input in the development of curriculum, like the implementer of the curriculum, syllabus, and syllabi. Since Ms. Zainab has shared the concept of curriculum, that it is the all sort of learning experiences. So I am so humble to share with you all work life examples and observations first, and then I will share with you the content or studies. I was sitting with my colleagues and they were talking about Atabad Jheel, Miss Nazreen and Miss Jamila. Those are practicing teachers at my workplace and they have done B.Ed as well. As to them, this Atabad Jheel should be the part of Pakistan studies syllabus because that has huge tourism exposure, amazing history, and a beautiful place. So this was discovered in 2010 and we are moving in 2022. So our syllabus, our curriculum should be aligned according to the discoveries we have. Then the second example I would like to give you about my course, accounting. AKUEB has designed syllabus and curriculum according to national curriculum, but there the subject specialists have incorporated quite a few contents. Those are taught in A levels. So once Sir Imran, my fellow colleague, joined us, our college, he was wondering if he would be teaching inventory valuation, cash flows, and other advanced topics, what he would be teaching in the bachelor studies to those students. So the role of the teacher in the curriculum development or syllabus is so important. If you see what is the need of the learner, because over here in the AKUB for first year and second year accounting, students' maturity level is not that refined. So we face a lot of problems teaching all the advanced contents in these papers. And the subject experts over there at AKUB, they are from chartered accountancy. They did their intermediate in chartered accountancy. That's why they have incorporated the advanced levels or advanced contents in these papers, which is a very challenging thing for all the practicing teachers, especially other than Karachi areas, because this board is followed across Pakistan. So teachers always face challenges. My point of sharing this example is if we are developing syllabus or the curriculum or the syllabi, we should take into the loop of the teachers. Those are into deep practices and they are closely working with the students. Though we need experts like students or the graduates from chartered accountancy or different accountancy field, but still you need to take the teachers into the loops. Those are working with grade 11, 12, or grade 9 and 10 even. The third example I came across when I was conducting parents-teacher meeting last time, and parents were so concerned about career counseling for second year students. And unfortunately, we couldn't conduct any session. So as far as learning experiences are concerned, career counseling is also the part of the curriculum, and we are the medium of communication to the school houses, to the boards, to the policymakers, to the authorities about what parents want and what are the needs of these students as far as 21st century skills are concerned. Third, after third example, I would like to refer here Pakistan Teachers Association. There is a role of teachers. That's why we have got this association Pakistan, where we can see all the practicing teachers, teachers, trainers, educators at one point in time, at one place, at one platform, and they are exchanging views, they are exchanging information, they are exchanging their practices, their strategies, and they have their input.
about curriculum, what to incorporate and what not to incorporate to the curriculum we are following these days for the students. Whatever the course we are teaching, there are teachers who exchange their views, and these views should be communicated to the policymakers and authorities as far as curriculum is concerned or development is associated with. Last thing I observed while analyzing SNC, there is a vital role of teachers, associates, and practicing teachers in the curriculum development. That's why at the end of SNC, we have got curriculum review committee, and there is a list of teachers. Is it convenient for you? All the Switching on the camera. There's no one. Don't worry here at my home, at my place right now. I'm just using mobile and no one will be going to know. Okay? Excuse me. Ms. Diana, can I continue? Starting? Did you receive my email? Somebody has unmuted the mic. Whose mic is this? First question. Do it from the question number 1. It's a merge. I'll unmute her. Papers. I have picked up different papers, questions, not a single one. I have not used a single one. Okay. Ji, continue with them. Okay, thank you so much. Okay, and after giving these examples and observations from my side, I would like to share the role and responsibilities of the teachers in the curriculum development. We have different roles and responsibilities, and we enjoy teaching and watching our students to develop their interest, skills, expertise in the areas they are really into. We create lesson plans and syllabi within the framework of the given curriculum. Since we are so responsible to implement the curriculum to meet students' need, we should be taken into the loop of the process and development of the curriculum. And we should play our part. Many studies support empowerment of teachers through participation of curriculum development. That means when we are the part of the curriculum development, we are empowered. We can give our reviews, reflection, suggestions, recommendations, and even the input, like the examples I have shared with you all. There are levels of teachers' involvement as a center of curriculum development that leads to effective achievement of educational reforms like SNC. There is the input of the teachers, policymakers have taken the initiative, and it was developed with the efforts of experts, associates, and teachers. We are an important factor in the success of curriculum because we implement. We are the end user of the curriculum, allow me to use this word, because we communicate the developed curriculum to the students. We are the medium of communication. Development, including the steps of implication and evaluation, definitely when we implement curriculum, we see the implications, the possibilities, the practicality that Ms. Zainab has been sharing with us, and then we evaluate the curriculum designed and processed for our students. We, the teachers, can contribute by collaboratively and effectively working with curriculum development team and specialists to arrange and compose martial textbook and content. Curriculum development is not enough only. We need resources, resource material. So the teachers can play significant role for the resources. Those are needed to implement the curriculum and to develop the curriculum in the time to come. Our involvement in the process of curriculum development is important to align content of curriculum with the students' needs in the classroom. Here, I would like to give you the example of my colleague. His son is right now in pre-primary, and my colleague was making him to memorize GK, general knowledge. And there was the question, Tawheed kya hai?
जवाब उनके रिसोर्स में लिखा होता शिर्क ना करना तौहीद है. And my colleague was like, a little child who is in pre-primary, उसे कैसे पता चलेगा कि शिर्क क्या है? तो उन्होंने इसे आसान बनाने के लिए बच्चे से कहा तौहीद का मतलब है अल्लाह एक है. He wanted to tell me कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट और द लर्नर. और जब बच्चे को ये पता चला अल्लाह है, he was very comfortable, he was very fine and he was repeating again and again. फिर क्या है, सारी चीजें ओवर द टाइम बच्चे एक्सप्लोर कर लेंगे. लेकिन जहां तक जीके है फॉर प्री प्राइमरी एंड इवन फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, वी should be very careful with the language terms and keywords. And teachers can help the policymakers, the boards, the authorities, how to rephrase the language, the terms and keywords in the curriculum or in the syllabus. I would refer here one saying of this Irish writer, Charles Handy. He says something really unique, but I wish that would happen ever. Instead of a national curriculum for education, what is really needed is an individual curriculum for every child. Because every child is unique, they have their own needs. I know that is very challenging to this world, but that is not impossible. We, the teacher, know the needs of all stakeholders, the learners, the parents, the schoolhouses, and the industry as well. And that's why our education is also important. If you have developed curriculum, the policymakers, authorities, the specialists, and the boards, they should arrange training sessions as well for us so that we can give our input in a better way. We teachers do understand the psychology of the learner, which is, I think, the most important thing, factor, or element to develop the personality of our learners. We are aware about the teaching methods and teaching strategies because we go to the classes, to the class settings every day with different things. We need to enjoy our practices. So we do a lot of things. We teachers play the roles as evaluator for the assessment of learning outcomes. We do assess. We do the checking, corrections, assessment of specific learning objectives every day in our classes. We possess significant qualities. We have multiple roles. We are planners because we plan our lessons. We are designers because we incorporate these strategies in the lesson planning. We are the managers, evaluators, researcher, decision maker, and administrator. So why not? We play our role in the development and process of curriculum, which is this great set of learning experiences in the schoolhouses. So I wish we all would take part into this process and we will contribute. Thank you very much for your patience and precious time. Okay, thank you, Iram. It was a nice presentation, and we'll actually talk about it in Sunday's class. So basically, we have a lot of presentation, but this is quite relevant to what a role of a teacher is in in curriculum development. Basically, teachers are, you're right in saying that they are the end users. So obviously, they better know what kind of basic tactical issues are and what we really need to tap in. So in that, okay, so that's great. Chale, let's move on to the next presentation. And ma'am, can I present? Because my light will go by 7:30. okay, great. My name is last in the list. Okay, I think second Mohammed Umar है, तो आप जरा उनसे पूछ लें. If sir, if you don't have any issues, so can we ask Zainab to present first? जी मैम ठीक है. Thank you. Okay, चले Zainab, let's go. Zainab.
Please present Zainab. Can you hear me? मैम लाइट चली गई शायद उनकी। Okay, so I think Umar can present, and when she comes, when we can look into it. Ma'am, can I start? जी सर बिल्कुल let's begin. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करिकुलम जो है वो किसको कहते हैं, करिकुलम की डेफिनेशन क्या है। तो a course of study that will enable the learner to acquire specific knowledge and skills, के एक मुख्तलिफ कोर्सेज का एक मजमूआ जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक गाइडलाइन लर्नर के लिए, जो एक लर्नर जो है इन सब चीज़ों से सीखता है, इसको हम एक एज अ करिकुलम डिफाइन करते हैं। There are three basic types of curriculum design: subject-centered design, learner-centered design, and problem-centered design. So I am presenting in front of you subject-centered design. तो सब्जेक्ट-सेंटर करिकुलम में सबसे पहले ये 1949 में रॉल्फ टाइलर ने जो है इसको प्रपोज किया था, और इट सराउंड्स नॉलेज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉलेज सेंटर करिकुलम, क्योंकि ये नॉलेज को ही सराउंड कर रहा होता है, एक मुख्य सब्जेक्ट्स को ही सराउंड किया होता है, इसलिए हम इसको नॉलेज सेंटर करिकुलम भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिजाइन रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और डिसिप्लिन। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो रिवॉल्व करता है सिर्फ एक खास पार्टिकुलर सब्जेक्ट के इर्द गिर्द, या आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द, और सिर्फ ये उन सब्जेक्ट्स को ही जो है वो कर रहा होता है, मतलब उन्हीं पे फोकस होता है इनका। सब्जेक्ट्स के अलावा आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का फोकस नहीं होता। This type of curriculum design tends to focus on the subjects rather than the individual. Subject-centered curriculum design describes what needs to be studied and how it should be studied. तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिज़ाइन जो है ये इस चीज़ को भी डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है कि एक स्टूडेंट को या एक लर्नर को क्या चीज़ें पढ़ानी है और उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो कोर करिकुलम जो है वो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अगर हम देखें कि सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन की जो एग्जांपल है वो कोर करिकुलम सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जो मुख्तलिफ स्कूल्स में, स्टेट्स में और एज अ होल कंट्री जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। द टीचर जो है वो प्लेज द रोल ऑफ अ स्कॉलर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज टू शेयर द नॉलेज। फोकस इज मेनली ऑन एकेडमिक एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेस इन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसमें मेन फोकस जो है वो सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट्स पे होता है कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है उस पर फोकस ज़्यादा नहीं होता। आगे हम इसका कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं? क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंटेंट्स इनटू सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट लाइक ग्रुपिंग्स। Subjects are clearly defined and distinguished. A hierarchy of subjects is commonly found according to their perceived value. Methodology applied and practiced is largely teacher-centered and expository in nature. Learning subject matter. Learning subject matter is an end in itself. मतलब इसका ये है कि लिसनिंग के लेक्चर्स और स्टडिंग टेक्स्ट बुक्स एंड स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशंस, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये इस चीज़ को शो करती हैं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच का इन्फ्लुएंस क्या है।
तो इसमें सारी जो फोकस है वो सिर्फ लर्निंग सब्जेक्ट मैटर पर होती है। प्रोग्रेस इज मेजर्ड बाय हाउ मच ऑफ द सब्जेक्ट अ प्यूपल हैज लर्न। तो एक स्टूडेंट की जो मेजर है कि उसने कितना सीखा है या उसने कितना याद किया है, उसको उसकी प्रोग्रेस मेजर की जाती है। उसको मेजर करने का तरीका क्या है, हम उसके एग्जाम्स वगैरह या क्लास टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें अरेंज करके हम इसको जो है वो मेजर करते हैं। देयर इज अ प्री डिटरमिन्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज and they advocate set standard for a class to be achieved by all students in order to qualify the examination. अब टीचर जो है वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में टीचर जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए। इसको हम इसी तरह भी कह सकते हैं कि अगर उन स्टैंडर्ड्स को हम अचीव स्टूडेंट जो है वो अचीव करेगा तो वो पास होगा, अगर वो उन स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं करेगा तो वो कोर्स दोबारा रिपीट करेगा। जो एक नॉर्मल एक निज़ाम हमारे स्कूल्स में या हमारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में चल रहा है पेपर्स वगैरह का। आगे इसकी एडवांटेजेस हैं। इट इज़ ईजियर फॉर द टीचर टू परफॉर्म। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है टीचर्स के लिए बहुत आसान है इसको परफॉर्म करना। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बाय पेरेंट्स एज दे हैव गॉन थ्रू इट। हमारे वालिदैन के लिए भी ये आसान है इसको समझना, क्योंकि उन्होंने खुद इसी तरीके से पढ़ा होता है। द सिंपल कम्प्लेक्स कंसेप्ट मेक्स इट इजियर टू एडमिनिस्टर। इसका जो सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ ये चलता है कि पहले सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं, उसके बाद फिर मुश्किल मुश्किल चीज़ें आती हैं। तो इस कंसेप्ट को लेकर चलना जो है, इसको एडमिनिस्टर करना ये भी आसान है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज अचीव्ड इन अ चाइल्ड थिंकिंग। बच्चे की जो जहनी नशोनुमा है उसकी डेवलपमेंट जो है वो अचीव की जा सकती है। इट इज़ यूजफुल फॉर स्पेशलाइजेशन इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज की ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करने के लिए सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो यूजफुल है। स्टूडेंट्स लाइक इट, दे आर यूज्ड टू इट एंड इट फिट्स देयर आइडिया ऑफ व्हाट स्कूल शुड बी। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको पसंद भी करते हैं और वो उनको इस चीज़ की आदत भी होती है। और एक जो स्टूडेंट का ख्याल होता है कि स्कूल जो है वो किस तरह का होता है, तो उस पर ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो है वो पूरा उतरता है कि भाई हम स्कूल में जाएंगे, टीचर लेक्चर देगा, किताबों से ही सिर्फ पढ़ेंगे और कोई काम नहीं होगा, जो किताब में लिखा हुआ है सिर्फ वो ही याद करेंगे और उसी में से पेपर आएगा। व्हाट स्टूडेंट्स लर्न दे लर्न वेल। स्टूडेंट्स जो याद करते हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज एफिशिएंट इन अ फील्ड इन विच रिसोर्सेज फॉर स्टाफ डेवलपमेंट आर लिमिटेड। अब जो छोटे स्कूल्स हैं या जो रूरल या अर्बन एरियाज में छोटे छोटे स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ स्टाफ डेवलपमेंट की कोई ख़ास रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, या टीचर्स जो हैं वो लेस क्वालिफाइड हैं, तो वहाँ ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस, सेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इसका पहला डिसएडवांटेजेस है। Subject center curriculum prevents students from understanding the wider context of what they are learning. Students को जो है वो prevent करता है एक सब्जेक्ट की वाइडर कंटेक्स्ट जो है कि मैथ की अगर कोई बच्चा 6th क्लास को कोई मैथ पढ़ रहा है तो वो सिर्फ उसी बुक तक ही महदूद रहता है। उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इस बुक के अलावा भी मैथ में क्या चीज़ें हो दुनिया में हो रही हैं या दूसरे स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है। In the traditional method of learning, students learn math in one period, reading in another, science in another. ये मैंने आपको अभी example दे दी। Passive learning in the subject center curriculum, students are discouraged from entertaining a different point of view than what textbook or teacher presents. Passive learning होती है, students जो हैं वो सिर्फ किताब तक ही महदूद होते हैं। जो किताब में लिखा है सिर्फ वो ही याद करना है, जो टीचर ने पढ़ाया है वो ही याद करना है और पेपर भी उसी में से आएगा। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिपेंड्स अपॉन अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। स्टूडेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द अथॉरिटी हायरार्की। तो ये करिकुलम जो है ये अथॉरिटी बेस होता है कि जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी मेकर्स जो हैं जो करिकुलम बना रहे हैं, जो वो डिसाइड कर देंगे सिर्फ वो ही चीज़ चलेगी। स्टूडेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, स्टूडेंट्स की कोई राय नहीं ली जाती। टीचर्स वुडंट बी एबल टू इनोवेट देयर टीचिंग स्टाइल टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इन अ क्रिएटिव वे।
तो इसमें एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग चल रहा होता है, सिर्फ लेक्चर मेथड जिसको हम कह सकते हैं कि क्लास में लेक्चर दिया, किताब से देख कर या खुद से याद करके आगे बच्चों को किताबें खुलवा के पढ़ा दिया। तो इसी तरीके से जो इससे फिर कोई टीचर्स की लर्निंग, एक्स्ट्रा लर्निंग भी नहीं होती, ना वो अपना टीचिंग स्टाइल बदल सकते हैं, ना टीचिंग स्टाइल में कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट सिंपली मेमोराइज व्हाट दे नीड टू नो इन ऑर्डर टू पास अ टेस्ट और एग्जाम इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लर्निंग। तो रटाफिकेशन का जो मेथड है वो इसी डिज़ाइन पे जो है वो अप्लाई होता है कि किताब में जो लेके आए उसको रट के आ जाए, टेस्ट और एग्जाम जो है वो पास हो जाएगा। इसके अलावा कोई लर्निंग नहीं है स्टूडेंट की। टीचर्स आर टीचिंग द स्टूडेंट्स टू थिंक इनसाइड द बॉक्स इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम्स। तो टीचर जो है वो भी इसी बात पर जोर देते हैं कि जो किताब में लिखा सिर्फ वो याद कर लें, अपने से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की या क्रिएटिव थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। So that's the end, ma'am. Any questions? Okay. Anybody wants to ask anything? No, ma'am. No, ma'am. Okay, great. Thank you, Omar. It was a good presentation too. So let's quickly move on to next. That is Zainab. Ma'am. Yes, ma'am. Let me share Okay. my This is screen. Zainab Nizar or Zainab Naeem? Nizar, Nizar. And you are in BA 2.5, right? No, ma'am, 1.5. All right. All right. All right. Is my screen visible to all? Yes, it is. Just a minute. All right. My topic is importance of single national curriculum. Firstly, we have to know that what is single national curriculum. It is a curriculum which is made in 2020, whose objective is to bring all the private schools and all the government schools on the same pattern of teaching, on the same pattern of teaching content, and on the same pattern of assisting the child. अच्छा, single national curriculum has also been made in 2006 और ये इस बार तो 2020 में बनाया गया. The reason why it has been made is that in 2006 when the single national curriculum was made, it was made only for the government schools, not for the private schools to adopt. But this time what difference they have made is that this curriculum they want the private schools and the government schools to follow. So that is why this need arises. Okay, if we go for three major objectives of single national curriculum is firstly the same, the motive is basically that the curriculum should be followed similarly into the private and government schools or in any different sector. Second, medium of instructions would be the same. For example, in our private schools, we see that mostly students are pressurized to speak in English and to write in English. Like English is the main key point of communication in private schools. However, if we see the government schools, वहाँ पे ये नहीं होता. We see that students are more convenient in speaking Urdu or mostly sometimes अपनी जो मदर टंग है जिस तरह सराइकी हो गई या सिंधी हो गई. तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया गया. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज द कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट. In private schools, we assist children through different methodologies. Objectives भी होते हैं, subjectives भी होते हैं, formative, informative, and there are many other patterns of assessment. However, जो कि government schools हैं वहाँ पे there is only ratification and उनको वो याद करके वो लिख देना. जिस तरह अभी उमर के presentation में भी था कि lecture system जो है वो ज़्यादा इसमें है government schools में. तो उस चीज को एक पैटर्न पे लाने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो ड्राफ्ट किया गया है. माय पिक्चर आल्सो रिफ्लेक्ट्स द सेम कि जब अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट दी गई हैं बच्चों को तो इक्वालिटी हम बच्चों में नहीं पा सकते. तो ये इक्वालिटी लेवल लाने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो बनाएंगे. नाउ what are the key considerations that are kept into the mind while making this single national curriculum is that it is based on the teaching of Sunnah and Quran, definitely, because we are a Muslim state and we have to follow this rule. Vision of Qaid and Iqbal is almost there in every content.
थर्ड इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया गया है जब ये एनसीएस बना था। देन इसके बाद जो टीचिंग ट्रेंड्स एंड टीचिंग पैटर्न्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं उनको चेंज किया गया है सिंगल नेशनल करिकुलम में 2020 के। आईसीटी को बहुत ज्यादा इंटीग्रेट किया गया है हर कंटेंट में। अगर सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ा जाए तो उसमें हर कंटेंट के साथ आईसीटी उसकी दी हुई है। जिस तरह मैंने वर्किंग की थी असाइनमेंट में सोशल स्टडीज के ऊपर, तो उसमें हर टॉपिक के साथ एक थीम इंटरलिंक्ड थी और उस थीम के लेकर आईसीटी थी। सो दैट इज द मेन डिफरेंसेस जिसको हम आजकल प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा ऑप्ट किया हुआ है। We have ICTs, we have projects, we have open-based answers, we have creative writings, we have critical thinkings, we have social and emotional development programs in the private schools. These are all adopted into the single national curriculum, and this is made mandatory for the schools to follow this. अभी जो है ये curriculum पंजाब बोर्ड की तरफ ज्यादातर फॉलो होना शुरू हुआ है। फर्स्ट टाइम सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान की हिस्ट्री में बना है ऐसा, जो कि मॉडर्न ट्रेंड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर ध्यान देता है। आईसीटी जिसमें इंटीग्रेटेड है, बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल थिंक बच्चों को किया गया। अगर आप लोग सिंगल नेशनल करिकुलम को थोड़ा रेफर करें तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हैं जिसमें बच्चे की माइंड की यूटिलाइजेशन ज्यादा है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा उसमें ज्यादा कर रहा है। So this is first time in the history that Pakistan has made such curriculum. Okay, it has 3 phases. First phase, which has already been developed, that is development of SNC textbook of 1 till 5. आपने भी जब अपना असाइनमेंट किया होगा तो आपने SNC के पेज पे देखा होगा कि आपके उसमें 1 till 5 तक के ही करिकुलम्स मिलेंगे और प्री प्राइमरी के मिलेंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ वही डेवलप्ड हुए हैं। सेकेंड फेज जो है वो उसका मार्च 22, मतलब आफ्टर 2 months जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड 6 till 8। एंड थर्ड स्टेज इसका नेक्स्ट ईयर मार्च में खत्म होगा, जिसमें 9 और 12 तक की बुक्स जो है वो डेवलप होंगी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू माय, ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया है एसएनसी का। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एसएनसी, व्हाई दे वांट एवरीवन टू अडॉप्ट दिस करिकुलम। फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट दैट, इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि जो करिकुलम है वो बच्चों को एक फेयर चांस देता है to get equality in education, to get equality in opportunities, to get equality in jobs and everything। जहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से आ रहा है, एक बच्चा प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, the child get admission in the intermediate colleges upon the basis of their matriculation। और वो एक माइंड सेट होता है कि बच्चा ना मैट्रिक किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से, तो उसका इतना इंटेलेक्ट लेवल नहीं होगा, इतना ज्यादा उसका परसेप्शन नहीं होगा, तो उसको एडमिशन देने से बेहतर है हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे को एडमिशन दें जिसकी प्रैक्टिस में रही है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये डिफरेंस इन रिसीविंग एन अपॉर्चुनिटी, डिफरेंस इन रिसीविंग द चांसेस ऑफ बेटरमेंट इन द फ्यूचर, इसको चेंज करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसएनसी को अडॉप्ट किया जाए। सेकेंड पॉइंट जो कि मैं कब से कह रही हूँ कि बच्चों की जो है वो एक लेवल के ऊपर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को अपग्रेड करने के लिए, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए एसएनसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये है टू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोराइजेशन एंड फोकस। हम सब ने 9 मैट्रिक के पेपर दिए हैं और उसमें ये होता है कि आप बहुत लंबे लंबे आंसर्स याद करके आ जाए एंड देन यू राइट द सेम वर्ड टू वर्ड आंसर्स with good presentations and underlinings and everything, you will get complete marks. Whereas if we go to the private school organizations, हम वहाँ पे देखते हैं कि इतना ज्यादा rote learning पे emphasis नहीं है, but क्लास 8 के बाद प्राइवेट स्कूल्स में भी 9-10 में रटिफिकेशन आ जाती है, क्योंकि उन बच्चों को भी सिंटेक्स बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है। सो इन बोथ ऑफ द केसेस द चाइल्ड हैज टू गो टू द मेमोराइजेशन एंड रटिफिकेशन। तो उस चीज को चेंज करने के लिए, क्योंकि जाहिर है जब वी नीड टू चेंज द असेसमेंट पैटर्न, वी नीड टू चेंज द करिकुलम फर्स्ट। जब करिकुलम चेंज होगा तो ही असेसमेंट पैटर्न चेंज हो पाएगा। मे बी दिस इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ एसएनसी, मे बी इन द फ्यूचर। फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आईसीटी को इंटीग्रेट किया गया है इसमें, जो कि हम प्राइवेट स्कूल्स के ही तरफ देखते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भी काफी कम स्कूल्स ऐसी हैं जो कि आईसीटी को इंटीग्रेट कर पाती है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ टीचिंग रिकॉर्ड्स। तो इस चीज को मैंडेटरी किया गया है। एसएसटी में जब मैंने इनका करिकुलम देखा, दे हैव ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर दे हैव 2 आईसीटीज। तो अगर सपोज 12 चैप्टर्स हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर द चाइल्ड विल बी गोइंग टुवर्ड्स 24 आईसीटीज।
और इनके बुक में ICT का जो है वो लिंक भी मेंशन था, that the teacher does not need to do anything, she just needs to follow the curriculum. एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक के साथ एक थीम इंटीग्रेट किया गया है SNC में इस बार, जो कि मॉरल्स एंड पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जो कि हम अमूमन नहीं कर पाते। तो इस बार थीम्स के साथ इंटीग्रेट किया गया, तो डेफिनेटली वो जो है वो उसके अंदर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंड दिस वाज माय प्रेजेंटेशन एंड क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम। All right, Zainab, we are about to end this session, so I'll just comment a bit. Basically, SNC की main जो आपने बात की कि significance यही है कि हमारे जो सिस्टम में पूरा एक निज़ाम है जहाँ पे हम लोगों को उनके क्लासेस के बेस पे स्ट्रैटिफाई कर रहे हैं, या जो क्लास सिस्टम एक आ गया है, दिस इज वेरी अनसेड, वेरी सैडली कि हमारे यहाँ कोई वो तबकाती निजाम जो है वो कहा नहीं जाता, लेकिन इट एग्जिस्ट वेरी मच इन आवर सोसाइटी, और एजुकेशनल सिस्टम पूरा इसका शिकार है। तो उस तबकाती निजाम को खत्म करने की एक कोशिश है ये सिंगल नेशनल करिकुलम। जैसे ज़ैनब ने कहा कि अंग्रेजी से अगर मीडियम स्कूल से एक बच्चा आ रहा है तो हम उसको प्रेफर करते हैं ओवर एनीबडी हु कम्स डाउन फ्रॉम एन उर्दू मीडियम और गवर्नमेंट स्कूल। तो उस सिस्टम को चैलेंज करने की एक कोशिश है SNC। सो वेरी ट्रू इन दैट, एंड थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन, दो आई वाज अबाउट टू कवर दिस। Ma'am, I'm Abu Bakar, B.Ed 1.5 year. My presentation is teacher-centered learning. So, teacher-centered learning में ये होता है कि टीचर ही लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और टीचर ही पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट्स जस्ट सुन रहे होते हैं और यानी वो आते हैं और लेक्चर सुनकर चले जाते हैं। जैसा कि ये डेफिनेशन में भी है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन स्टूडेंट्स पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर टॉक्स व्हाइल द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन। यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी टीचर पर ही होती है। वो जैसे भी लेक्चर प्रिपेयर करके आए तो वो आकर डिलीवर कर दें और स्टूडेंट्स उसको उसी पर ही फोकस करते हैं। ये बहुत पहले से यही चला आ रहा है कि टीचर लेक्चर प्रिपेयर करता है और आकर स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है क्लास में, और इसी तरह ही चलता आ रहा है। लेकिन अभी चंद सालों से ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि सॉरी मैम, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि अभी एक्टिविटीज़ भी आ रही हैं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी हो रही है और कुछ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग भी हो रही है। तो जिस तरह इस स्लाइड में भी है कि इन इयर्स पास्ट स्टूडेंट्स रिसीव्ड नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशनल लेक्चर डिलीवर्ड बाय द क्लासरूम टीचर। टीचर से ही स्टूडेंट सीखते थे। once or twice a year students were asked to collaborate and work on projects together। तो अभी ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स की होती है और एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो इसी तरह टीचर करिकुलम में होता क्या है कि इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, यानी एक चीज़ का नफाज होता है और तहकीक होती है और डेवलपमेंट होती है। तो टीचर सेंटर्ड करिकुलम के जो मेथड्स होते हैं उसमें टीचर ही बात करता है, यानी पूरी क्लास में टीचर का लेक्चर ही चल रहा होता है और इसी तरह वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह और होमवर्क भी देता है। और हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, हम सब ने ऐसे ही पढ़ा कि असाइनमेंट्स होती थी, होमवर्क होता था, फिर दूसरे दिन टीचर कॉपीज चेक करते थे, फिर लेक्चर और फिर ये सारी चीज़ें जिस तरह ये मेमोराइजिंग है, रिव्यूइंग है, क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन है। तो आगे है टीचर सेंट्रिक एजुकेशन। ये भी अगेन वही बात है कि पूरा का पूरा टीचर पर ही डिपेंड करता था। और फिर जो इसकी खुसूसियात थी
वो ये थी कि टीचर अपना टाइम मैनेज करता था खुद ही, कि मैं कितना वक्त कितना पढ़ाऊंगा, कितना समझाऊंगा, और फिर कॉपीज चेक करने में मेरा कितना वक्त लगेगा। तो ये सारी चीज़ें टीचर करता था। उसके बाद ये कुछ कंपैरिजन्स हैं टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर के। अगेन फिर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट मैटर taught should reflect basic areas that are essential and agreed upon content for learner attainment. फिर टीचर का जो रोल होता है टीचर सेंटर सब्जेक्ट सेंटर या टीचर सेंटर करिकुलम में, वो ये है कि वो बुक को फॉलो कर रहा होता है टीचर, और जो भी बुक में करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं तो उन्हीं को ही फॉलो कर रहा होता है। और इसी तरह बच्चों में थिंकिंग पैदा करना और वो सारी चीज़ें, यानी सिर्फ सिलेबस के ही अकॉर्डिंग वो चलता है। इसी तरह टीचर जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता था। तो अभी तो बहुत सारी सोर्सेज हैं इसके स्टडी के भी। तो आगे फिर ये टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर के अगेन कुछ ये हैं कंपैरिजन्स हैं। बस यहाँ तक मैम, अगर कोई किसी को क्वेश्चन हो। Right. Hello. All right. If anybody wants to ask anything. Okay. Thank you, sir. It has actually helped us revise the concept कि basically teacher centered curriculum वो होता है जहाँ पे teacher को as a core of knowledge समझा जाता है, ठीक है, और वही Yes. हम ये समझते हैं कि teacher knows everything, and that has been a case for hundreds of years, but अब चीजें change होने लगी है, but still it is very slow in our context. Yes, ma'am. Yet we understand that teacher is a facilitator. She is not the only source of knowledge, but there are a number of sources that are very important, and a teacher needs to also update herself with time, otherwise she would become an obsolete source of knowledge. Chalaji, thank you so much. It was a good presentation too. Can we have the next person presenting? कर ले अम्माद, चले. Who's next then? Thank you. Ma'am, Nazia. Nazia, can we have Ahmad doing it before you, because he has some electricity issue at his place? Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, Nazia. चले अहमद, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें. Islam class. My topic is teacher-centered curriculum. First of all, हमें ये मालूम करना पड़ेगा टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता क्या है. जैसा कि सभी बताया कि जो है वो इन दिस करिकुलम द फोकस इज अपॉन टीचर्स टीचिंग स्किल्स एंड द वे ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंटेंट. इसमें जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक तो टीचिंग स्किल्स का होता है और वे ऑफ डिलीवरी होता है कंटेंट होता है. फॉर एग्जांपल इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और हमारे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं वो मोस्टली जो है वो टीचर सेंटर्ड करिकुलम को अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम कंटेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं. इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज स्किल्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टीचर टू स्टूडेंट. अच्छा, जैसा से हमारे मोस्ट ऑफ द हमारे क्लासरूम्स होते हैं चाहे वो जितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन उसमें मोस्टली जो है मैं कहता हूँ 50% एटलीस्ट जो है वो ये होता है कि वो हम नॉलेज स्किल्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर होते हैं फ्रॉम टीचर्स के ही थ्रू अभी तक जो है वो हम काम ये कर रहे होते हैं. अच्छा, टीचर इज सेंटर ऑफ नॉलेज एंड जिस तरह से हमारे जो है टीचर जो है सेंटर ऑफ नॉलेज होता है हमारा मेन जो. मैम आपको सेकंड स्लाइड नजर आ रही जो पढ़ रहा हूँ अभी? नो अहमद, आप फर्स्ट स्लाइड पे ही हैं सर. आई थिंक आपको स्लाइड चेंज करने की जरूरत है. मैम मेरे पास चेंज कर दी मैं इसको. ओके, मे बी वो थोड़ा सा, हाँ अब हो गई है. ओके. अच्छा, तो ये जो इसमें फिर ये होता है कि मैं टीचर इज द सेंटर ऑफ नॉलेज होता है
और लास्ट वन ये चीज जिसकी मेन जो इश्यू होता है उसमें ये होता है टीचर सेंटर कोरिकुलम फोकस ऑन स्पेसिफिक नॉलेज इंक्लूडिंग ऑफिशियल कोरिकुलम एंड कोर कोरिकुलम। ये 2 कोरिकुलम के टाइप्स हमने पढ़ी थी। ऑफिशियल कोरिकुलम जो मतलब हमारे स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया था, और कोर कोरिकुलम जो कोर वैल्यूज होती हैं उसको उसमें इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद इसके एक पिक्चर के जरिए मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि ज़ाहिर टीचर जो होता है वो हमारा नॉलेज का इसमें मेन रिसोर्स टीचर होता है, और उसके ज़्यादा नॉलेज होती है, और वो टीच स्टूडेंट्स को मोस्टली वन वे डायरेक्शन में जो है वो चीज़ें जो है वो डिलीवर कर रहा होता है। इसका फायदा तो ये होता है कि मतलब इस पिक्चर्स के जरिए आप देख सकते हैं कि जो है आपके पास बहुत सी चीजें डिलीवर तो हो रही हैं, लेकिन आप ये देखें लास्ट वाला स्टूडेंट जो है वो सो भी जाता है। ये जो लेक्चर मेथड होता है हमारा या जो टीचर सेंटर्ड होते हैं उसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से जो है हमारी कुछ इसके पॉजिटिव कुछ कॉन्स भी हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए टीचर सेंटर्ड कुरिकुलम की, कि टीचर द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इन चार्ज ऑफ लर्निंग। मतलब जो भी चीजें होंगी वो टीचर के ही थ्रू होंगी, सब चीजें टीचर के से होती हुई जाएंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि स्टूडेंट आर यूजुअली पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। वो एक्टिवली नहीं पैसिवली कर रहे होते हैं, मतलब वन वे कम्युनिकेशन इसमें हो रही होती है। और स्ट्रक्चर रोल्स इज टू द प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवर, जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि जो है वो प्राइमरी रिसोर्स जो है हमारा वो टीचर ही है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है और हमें एवेल्यूएट करता है। अच्छा, स्टूडेंट आर व्यूड एज एम्प्टी वेसल्स हु पैसिवली रिसीव नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर। मतलब वो बिल्कुल एक तरह से एम्प्टी वेसल, मतलब खाली, जैसा खाली माइंड या खाली बर्तन कितना होते हैं, और हम मतलब हम कंसिडर टीचर जो हम ये डिजाइन करते हैं तो हम ये समझ होते हैं जैसा से कि स्टूडेंट जो है वो एक एम्प्टी वेसल्स हैं, और उसमें हमें जो चीज भी पोर करेंगे मतलब डाल देंगे तो वो उसको लेकर फिल कर लेंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि ये मोस्टली अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में हमारे चल रहा होता है, और आजकल के जो मॉडर्न क्लासरूम्स हैं उसमें भी काफी हद तक ये चीज चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे मजीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 और है कि टीचर एक्ट्स द सोल सप्लायर ऑफ नॉलेज एंड अंडर द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या होता है, जिसमें हम जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो स्टूडेंट जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, टीचर्स ऑफन यूटिलाइज सिस्टमेटिक स्क्रिप्ट, मतलब सब चीजें जो है उसके पास जो है वो बिल्कुल दी हुई होती हैं, वो उनको बस लेकर साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा, टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन इज फेयरली लो टेक, ऑफन रिलाई ऑन द यूजिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। ज्यादातर ये जो हमारे पास ये होता है लो टेक्नोलॉजी इसमें होती है, होता है हमारा जो मेन रिसोर्स टीचर है, तो वो अगर मल्टीमीडिया या दी और जो टेक्नोलॉजी की जो रिसोर्सेज है वो यूज ना भी करे तो वो इसमें वर्क कर सकता है। और हम रिलाई कहाँ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर हम टेक्स्ट बुक या वर्क बुक्स में कर रहे होते हैं, और आजकल के जो मॉडर्न स्कूल में है वो टेक्स्ट बुक और वर्क बुक को निगलेक्ट नहीं कर सके। तो आज का मतलब ये जितनी भी इसकी जो है वो डिसएडवांटेज है उसके बावजूद ये चल रहा है। अच्छा, असेसमेंट आर इन मेनी केसेस ओनली कैरिड आउट एज सेमेटिक। सेमेटिक मतलब एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग लेते हैं। इसमें जो भी हम असेसमेंट करते हैं वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, नॉर्मली यही देखें यही प्रैक्टिस हमारी चल रही होती है, जिसके अंदर जो है हम एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द चैप्टर हम बीच में नॉर्मली हम नहीं कर रहे होते। तो ये भी टीचर सेंटर कुरिकुलम का एक ये हम पार्ट है जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, रिलाई एड्रेस क्वालिटेटिव इश्यूज एंड लर्नर्स प्रोग्रेस, इसी के जरिए हम जो है उनकी जो है वो क्वालिटी को असेस कर रहे होते हैं। इसके बाद एडवांटेजेस हैं ऑफ टीचर सेंटर्ड कुरिकुलम के। उसमें एडवांटेज में क्या है, एज अ कुरिकुलम इज डिजाइन बाय द टीचर इट बिकम इजी टू अचीव द डिजायर्ड गोल। अब जब ये टीचर सेंटर्ड कुरिकुलम में जो कि हमने टीचर को ही देखकर बनाया है, तो हम टीचर को जानते हैं कि टीचर की क्या एबिलिटीज हैं, तो इसमें जो इजी होता है अचीव करना जो हमारे डिजायर्ड गोल होते हैं। अच्छा, व्हेन एजुकेटर इज टीचर सेंटर द क्लासरूम रिमेन ऑर्डिनरी, students are quiet
and you retain full control of the classroom and its activities. अच्छा, इसमें जब ज़ाहिर सी टीचर सेंटर होता है, हर चीज़ हमारी टीचर ही कर रहा होता है, तो फिर हमें क्लासेस भी ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं। जैसे आजकल तो अब ये कि कम से कम क्लासरूम तो हमारे जो ऑर्डिनरी नहीं होते, वो बड़े उसमें उनको डेकोरेशन करते हैं हम। लेकिन जो लेकिन हम जब ये मान लें कि टीचर ही सेंटर्ड ऑफ नॉलेज है, तो फिर हमें इसकी नीड नहीं रहती कि हम क्लास को जो है वो डेकोरेट करें या इसको जो है वो थोड़ा सा अपडेट करें। स्टूडेंट्स आर क्वाइट दैट्स मतलब जब वो टीचर ही, जैसे अभी भी मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और पिछली प्रीवियस प्रेजेंटेशन भी हुई है, वो सारी टीचर सेंटर्ड हुई है मोस्टली, जिसमें प्रेजेंटर ने अपनी दी है नॉलेज आपको डिलीवर की। तो स्टूडेंट क्वाइट होते हैं, जैसा से अभी सब माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वाइट है, एंड रिटेन फुल कंट्रोल, और उसका कंट्रोल फुल होता है। जैसे सब चीजें जब टीचर ही कर रहा है तो वो उसको कंट्रोल होता है, और सारी एक्टिविटीज जो है वो टीचर के कंट्रोल में होती हैं, जो कि आपका टाइम जो है वो लॉस होने से जाती है, दीगर इसके एडवांटेजेस ये होते हैं। अच्छा, इररिलेवेंट मटेरियल सब्जेक्ट मैटर इज अवॉइडेड। समटाइम देखें आजकल हम ये भी करते हैं ना कि बुक तो हमारे पास जो है वो बहुत सारी मतलब उसमें जो टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो है उसमें से क्या करते हैं, जो इररिलेवेंट मटेरियल होता है वो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। मतलब कुछ टॉपिक्स हम जो है वो पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाते। वैसे तो होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर 5 की बुक है तो वो कंप्लीट 5 में हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि वो टीचर सेंटर्ड कुरिकुलम में डिजाइन होते हैं, कभी टीचर कितना उसको कवर कर सकता है, इसलिए हम जो है उसमें से जो इररिलेवेंट मटेरियल होता है हम समझते हैं कि भाई ये भी इनको जरूरी नहीं है, या फिर ये हम पढ़ चुके हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसका टीचर फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन द क्लासरूम एक्टिविटीज। वैसे जब टीचर के सब चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं, तो वो कंफर्टेबल भी होता है और कॉन्फिडेंट भी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे क्लास में क्या करवाना है, और सारी एक्टिविटीज उसके अंडर कंट्रोल होती हैं। उसके बाद एडवांटेजेस में ही मजीद है कि कंटेंट सब्जेक्ट मैटर इज लॉजिकली अरेंज। हम देखें उसको लॉजिकली अरेंज कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारा जो कंटेंट होता है वो जरा स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं कि भाई लॉजिकली ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, भाई पहले टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड टॉपिक ये करेंगे, जो कि इसको हेल्पफुल करेगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय द टीचर। अच्छा, इसमें जब ज़ाहिर सी टीचर ही इसको बेस बनाकर ये कुरिकुलम डिजाइन किया गया, तो फिर टीचर की तरफ से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, और इसमें ज़ाहिर सी बात है रिसोर्सेज भी हमारे पास ज़्यादा नहीं लग रहे होते, तो इसलिए ऑब्जेक्शन ज़्यादा इसमें रेज होते नहीं। अच्छा, बिकॉज स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन, दे लर्न इंडिपेंडेंटली। जब हम सब चीज़ें टीचर खुद करवा रहा होता है, तो इसमें जो एक्टिविटीज होते हैं वो भी हम इंडिविजुअल दे रहे होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है उनके लिए जो वर्क करने की जो एबिलिटी होती है और डिसीजन मेकिंग जो होती है, मतलब विदाउट डिस्कस द अदर, उनकी जो ओन पावर होती है वो इससे ग्रो करती है। अच्छा, बिकॉज यू डायरेक्ट all classroom activities, you do not have to worry that student will miss an important topic. जैसे आप एक जनरल इंस्ट्रक्शन सबको दे रहे होते हैं, तो फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मिस होने का चांस कम होता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लोगों को या ग्रुप में हम लोगों को टास्क दे रहे हो, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो पूरी क्लास को जो है वो नहीं मिल पाती, तो वो उसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मिस होने का चांस रहता है। और इसका लास्ट वन डिसएडवांटेजेस क्या है टीचर सेंटर्ड कुरिकुलम के, वो ये है कि टीचर सेंटर्ड सेशन डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चन एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। अच्छा, ऐसी वजह इसमें जब सब चीजें टीचर कर रहा होता है, जिस तरह से मैं ही सब चीजें दे रहा हूँ, तो अगर स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल आता है तो उसको मैंने परमिशन नहीं दी हुई, जाहिर सी वजह क्या होता है, फिर वो थोड़ा सा उस वजह से कंफ्यूजन में आ जाता है कि वो, और उसकी जो है वो सिर्फ ओन लर्निंग जो है वो चल रही होती है। स्टूडेंट डू नॉट लर्न द कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज टू शेयर व्हाट दे हैव लर्न। अच्छा, अब जो है जिस तरह से हम अक्सर क्लासेस में आप भी करवाती हैं, दीगर टीचर्स भी करवाती हैं कि वो लोगों के पर्सनल शेयर, जैसे हम अभी यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी जिस तरह से होता ही है कि हम सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो सबके ओन व्यूज भी इसमें ऐड अप हो रहे हैं। लेकिन जो है टीचर सेंटर में जो है
इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती स्टूडेंट्स को कि वो अपने ओन व्यू शेयर करें, क्योंकि वहाँ से वो सिर्फ टीचर ही सब चीज़ें गाइड कर रहा होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और थर्ड वन के क्या ये है कि दे डू नॉट लर्न द कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स में सफर। अब जैसे जब सबको इंडिविजुअल टास्क मिल रहे हैं, इंडिविजुअल असाइनमेंट मिल रहे हैं, इंडिविजुअल सब चीज़ें मिल रही हैं, तो उससे क्या होता है, जो कोलैबोरेशन की जो उनमें पावर होती है, जो एबिलिटी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो बिल्डअप हो जाने चाहिए टीचर्स स्टूडेंट्स में, वो उनमें बिल्डअप नहीं होते और वो इस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स उनके जो है स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती कि वो एक दूसरे से जो कोलैबोरेट कर सकें। सेकंड लास्ट जो डिसएडवांटेज है वही कि टीचर सेंट्रिक करिकुलम कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट, देयर माइंड्स में वंडर एंड दे मे मिस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जिस तरह से अब मैं ही बोले जा रहा हूँ टीचर सेंटर्ड में, तो जाहिर सी जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो रहे हैं। तो टीचर सेंटर करिकुलम के एक जो डिसएडवांटेज बहुत बड़ा वो क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट जो है बोर हो जाते हैं और उनके माइंड में वरीज हो जाती हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो उनके ड्यूरिंग द लेक्चर या प्रेजेंटेशन उनके माइंड में आ रहे होते हैं, वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मिस कर देते हैं। और लास्ट में डिसएडवांटेज ये है कि स्टूडेंट डू नॉट यूज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं, जिस कैसे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बिल्ड नहीं होते और फिर वो कॉन्फिडेंट उनके अंदर बिल्ड नहीं हो पाता। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। ओके, थैंक यू अल्लाह। Thank you, Ahmad. It was a good presentation. Chale, thank you. Now, who's next? Ma'am, me, Nazia. All right. So, okay, Nazia, you can present, and then after that, I think Izara, अब आपको कोई issue तो नहीं है light का? So after Nazia, we'll have who's next on the list? Ma'am, it's me. Ma'am, can you see the screen? Yeah. Okay. So Chale, should I okay. start? Yeah, start please. Okay, Assalamu alaikum everyone. My topic is Wheeler's curriculum model. It is basically, he was an educator at the University of Western Australia in 1967. According to the Wheeler model, the curriculum is a continuous cycle responding to the changes within the education, where any new information or practice will bring change. It basically undertakes the situational analysis, whereby the context or the situation in which curriculum decisions are to be taken is thoroughly studied. This helps curriculum developers take correct decision, thus encouraging active participation of staff in school-based curriculum. So whatever we are doing in the school, then and there we see the continuous changing, if there is any change related to the objectives or the contents. Now, the Wheeler's definition of curriculum is, it's basically the planned experiences offered to the learner under the guidance of the school. The Wheeler was very much influenced by the work of Tyler, Taba, and Bloom. The aims, goals, and objectives. Aims cover all the experiences provided in the curriculum, whereas the goals are tied to specific subjects or groups of contents within the curriculum, while objectives describe more specific outcomes like we do in the lessons and instructions delivered in the classroom. So whatever the changes we do in the lessons, we might take the objectives according to the activities related to the students, learners. The Wheeler's curriculum model is prescriptive as well as cyclical, non-linear within 5 interdependent stages. First is aim, goals, and objectives. Number second is selection of learning experiences, then selection of content, and then organization and integration of experiences and evaluation. So we have the flexibility. In the Wheeler's model, we have the flexibility. We can start with the aims, goals, and then selection learning. And once, if we reach to the organization integration, we can again go back. We can see the learning experiences again and then change it.
Wheeler's cyclic model has the advantage of flexibility over the linear model. It allows curriculum specialists to start over working at any stage in the process. It also emphasizes content selection and the integration of content in providing quality learning experiences. There are advantages of the Wheeler model. It is a continuing activity. It incorporates new information into the curriculum. It views the curriculum elements as an interrelated and interdependent. It has a feedback mechanism. It emphasizes on the situational analysis. And the most important is evaluate at a stage where its findings are feedback into the objectives. It has the disadvantages like it is very time consuming as well. Ma'am, that's it. Thank you. Thank you, Nazia. Who's next? Ma'am, may I start my presentation? अच्छा, okay, we are running like, it's 10 minutes time. तो आपकी हो जाएगी इतनी देर में? Yes, ma'am, hopefully. Who's that? Aisha. Yes, this is Aisha Okay, Iqbal. okay. Aisha Iqbal के बाद जो है we can have Miraj, and then we can have Saira. Saira, hope you have no issues because I think Miraj has something. So he's requesting to do it earlier. So after Aisha, can we have him? Is Saira here? All right, Aisha, let's begin. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all of you. This is Aisha Iqbal. Am I audible, all of you? Yes, you are. Okay. So today the topic of my presentation is role of Higher Education Commission. Especially I am here discussing the role of Higher Education Commission in Pakistan. Okay, so today the presentation lineup will be like the mission and little bit the description of Education Commission in Pakistan, then the projects and the program hosted by the Higher Education Commission. Then at the third, I will discuss the responsibilities of Higher Education Commission in Pakistan. And in last, I will discuss about the services which the Higher Education Commission of Pakistan is giving to students, to university, to faculty. Okay, so the mission of this Higher Education Commission in Pakistan is to facilitate the institution of higher learning to serve as an engine of socio-economic development of Pakistan. Like सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप करने का रोल नहीं है बल्कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अराउंड द ग्लोब उसका जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का मेन मिशन है. Then about the Higher Education Commission of Pakistan is an independent, autonomous and constitutionally established institution of primary funding, overseeing, regulating and accrediting the higher education efforts in Pakistan. What are the projects and programs hosted by the Higher Education Commission is for the foreign students, like admission to foreign students apart from indigenous. Then second, highlighting and sponsoring social sciences, arts and humanities. Then at third, they are providing the scholarship schemes for both the foreigners and for domestic education as well. Then at fourth, they are having developmental programs for faculty and they are having development program for students as well. Then they are having a tenure track structures which include the services of the government teachers which are like performing their functions in the university level or in the education sector of Pakistan. They are having a proper tenure record like how long they are serving in the education ministry or education in Pakistan. Then they are having a learning innovation divisions, initiating and operations of learning innovation divisions. Then at seventh, they are ensuring the quality by quality assurance self-development not only the main campus but at the universities level they are having a quality assurance cell in all the universities. Then at the eighth they are conducting the courses which are contributing in the development of teachers. Then what are the responsibilities of HEC in Pakistan? As a regulating body they are formulating the policies which include the guiding principles and priorities of higher education institutions for promoting the socio-economic development of the country.
Then prescribing the conditions, like under which condition institutions, including those that are not part of the state education system, may be opened and operated. Then third is bridging the gap and support research culture in Pakistan, support the developmental links between the institute and industry, and then analyze the gap and then try to bridge it. Recognition of degrees. The degrees are like authentic or not, that these degrees recognition is the responsibility of the HEC. Then what are the services of HEC for students, for faculty, for university, and for international students as well? So services to students are include like undergraduate professionals. Under this heading, the education in Pakistan is going through a major paradigm shift with the implementation of latest policies, and with the specification of this program, this policy aims to raise the quality of education to international standards. They are trying to meet the international standard, aligning their degree length, degree content with the international standard. Then equivalency degree assurance. Nevertheless, the Higher Education Commission has evolved a procedures whereby it is able to meet challenges and addresses all the complexities involved. Then third, degree attestation, I have discussed it before. Then they are having fourth, digital libraries. Digital libraries actually for the support of like research culture in Pakistan. With the help of digital library, it is very easy to access the international literature, which is like having a lots of a dollar cost. But with the help of this library, the students or the faculty member easily access those content in the lesser amount or with the free access. Then HEC library is having the access of 9,000 theses, whatever the like the students of MPhil and the PhDs are doing the thesis, they are stored in the Higher Education Commission's library, and it is accessible with the name of that specific particular person. Then declamation contest. Declamation contest is like a host by the Higher Education Commission with the aim to engage the university students in learner-centered intellectual practices. This program is named as Pakistan University Debating Championship. Then seventh, services for the students include the electric wheelchair scheme. This electric wheelchair scheme is actually support the disabled students to in order to promote the education culture in this disabled students as well. Then PM National Laptop Scheme. This was the initiative of Nawaz Sharif in 2013, only for 5 years, and in this time duration, they are distributing the laptop for the support of education. Not only the laptops are the part of this scheme, but the main motto was the laptop. But this scheme also includes the interest-free loan, business loan, skill development programs, and training scheme as well. But this scheme was only for 5 years. Then PhD country directory. All over the like Pakistan, there are a number of PhDs. So the HEC is having a proper directory for maintaining the record of the research scholars in Pakistan. Then what are the services to faculty members, like the person who are serving in the university? Plagiarism policy. There is a plagiarism policy. Plagiarism is actually a crime. It means that we are owning the content of other with our own name. So it is kind of a stealing the other thoughts. So plagiarism policy, what are the international criteria for maintaining the plagiarism in the books or in the thesis or in the content of the research papers? So plagiarism policy is actually designed by the Higher Education Commission. HEC Outstanding Research Award is promoting the research culture in Pakistan, and this award includes not only the certificate but for the cash prize as well. And this supports the research publications in Pakistan. National Academy of Higher Education. National Academy is established as an autonomous institution and under the umbrella of Higher Education Commission to improve the quality of the teaching, research, and governance in HEC across Pakistan. The main vision of this program is promote the quality research and teaching related to all the aspects of higher education in Pakistan. Then fourth is continuous professional development program.
CBD conduct various capacity building and refreshers courses for teaching faculty of higher education institution across Pakistan, and these workshops aim to provide the background and skill necessary for faculty members. Conduction is only not the criteria decided by the HEC, but for the continuous development is also like comes under this umbrella. So HEC is also providing these services to the faculty to make them updated about the latest knowledge. Then fifth is capacity building for doctoral provision in Pakistan. This program is actually um, for the doctoral students, like the students who are enrolled in the research degrees, and it gives like it is anticipated that this project will lead to faster thought of successful doctoral students, which will allow for ultimate expansion in the number of doctorates and enhance the reputation not only for the doctoral students and their supervisors, but also the university. Like this program is for the students, but this program supports the okay. Okay. The sixth one is Peridot Research Program. This program is in collaboration with the Pakistan Education Ministry and French researchers to encourage the research, like to encourage the research culture for the researchers from France and from Pakistan to do some researches with the joint intentions. This program is implemented in Pakistan by HEC, and in France it is by the Ministry of Foreign Affairs and International Development and the Ministry of Higher Education and Research in France. Then the seventh one is problem-based applied interdisciplinary research program. This program took an initiative to finance proposals on interdisciplinary applied this problem. Basically, this program is actually to provide the financial support and fundings to the researchers, which is like ideas given by the researchers who is having a productive mind, and this productivity not only the having the impact on their university or their career, but the impact on Pakistan economy as well. Then Grant Challenge Fund. This funding program is also give the financial support to the researchers, but with the collaboration of World Bank. And this program is implemented in Pakistan by HEC to support the research culture again in Pakistan in the strategic sectors of economy, the strategic sectors which are having the long-term impact in Pakistan's economy. And this provides support not only in the research but support in the competitive and peer-reviewed and blind peer-reviewed evaluation of the proposal. Once the proposal submitted to the HEC for the funding, this proposal was need to fulfill some criteria, pass the test of the competitiveness. Then there is a peer review. Then there is a blind peer review, and then once the successfully complete all the criteria, then this fund will release to that researcher or researching bodies. Then there are thematic research grant program. Thematic research is having the intention to do the researches on some specific themes which are allocated, like the allocated area as per the Pakistan's need. HEC ने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया है अपनी वेबसाइट पे, और उससे एलोकेटेड जो रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो रिसर्चेज होती हैं, अगर वो उस थीम या उस एरिया में जो है वो आ रही होती है, तो HEC उनको जो है वो ग्रांट कर देता है, बिकॉज वो एरियाज जो है वो ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान इकोनॉमी पे वाइडर इम्पैक्ट है. So this is thematic research grant program, which is focus on the themes which are decided by the Education Ministry and the economy of Pakistan. Then there are services to universities. There is a quality assurance agency. In every university, there is a quality assurance cell, which is actually designed or hosted by the HEC in private and the public sector as well. Then there is a knowledge exchange initiative. Knowledge exchange initiative makes the link to share the knowledge, and not only in that university on specific area, but
for all the overall Pakistan. And this knowledge sharing or knowledge exchange initiative is having a impact on different sectors of Pakistan. Then there is a library support grant. Library support grant provides the grant to the university to update or to buy the new books and to run a proper library in the university. Then there is a financing planning, already discussed in the previous topic, that there is a finance planning like the grant of finance in the HEC Kisco grant. They need something. There is a proper planning in the university as well. Then there are services to overseas Pakistanis. There's a degree attestation services that students who are applying for the foreign degrees or foreign like scholarship programs in foreign other universities. They need a proper attestation of the degrees from HEC. Whatever the university is, but the degree need to be attested from the HEC. Then there is a equivalent services. Sometimes there is a like exchange, like we are having a 12th grade. Then in some countries there are some other grades. So HEC is having a criteria to equivalent all the things. So they are providing the degree equivalent services. Then scholarship services and then education testing services. Sometimes the students are applying for higher education outside the Pakistan foreign. So they are asking for the like hack test and GRE test. So these services are also provided by the HEC. If you have any question, I will appreciate. Thank you. Okay, thank you, Aisha. It was quite informative, and you covered almost all the roles of HEC. Basically, HEC is a regulating body जो कि आपकी higher education को regulate कर रही है, and they even foresee के higher education के जो institutions है वो up to the mark हो, research को जो है promote किया जाए. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दूसरे roles हैं जो further education के लिए स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, स्पेशली रिसर्च का कल्चर पाकिस्तान में डेवलप करना, ये उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सो आई गेस यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट हियर. सो गुड. हु इज प्रेजेंटिंग नेक्स्ट? Saira is on the list, but she has requested that she would be presenting tomorrow, so we can take in Miraj. Miraj, are you presenting? Have you requested anybody to display your slides? मैम मैं दे दूं? Just 1 minute. Who's this? Izara? नहीं. Okay, if Miraj, आपका इंटरनेट चल रहा है क्या? Because I can see him in the list, but I can't hear him. चले, okay. So who's presenting? जी मिराज. Okay, okay. वो कर लें. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. जी मैम, स्लाइड्स जो है वो कर दें, मैं करता हूँ उसको एक्सप्लेन. I asked you कि आप किसी क्लास वालों से आपने नहीं कहा प्रेजेंट करने के लिए. The thing is that कि आप लोग मुझसे कह तो रहे हैं कि आप प्रेजेंट कर दें, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि once the recording is on, I cannot move backward. तो ये एक बहुत मसला है. 1 मिनट मुझे दें, मुझे एक क्लास को पॉज करके. Okay, you can begin now. You can begin now. आज मिराज, आप प्लीज प्रेजेंट करना शुरू करें. जी मैम, मैं कर रहा हूँ. ठीक है. हमारा जो टॉपिक था, जो मैंने सिलेक्ट किया था, वो था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करिकुलम. यानी जो हम करिकुलम डिजाइन करेंगे, या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या अगर नेशनल करिकुलम अगर हम डिजाइन करते हैं, तो अगर हम उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अगर फॉलो करते हैं, तो वो
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के फिनोमेना को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमारा बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करिकुलम होगा। सबसे पहले मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैम कर दीजिएगा। जी, एक्टिविटी मेंशन कर रहा हूँ। द स्टडी ऑफ बीइंग एक्टिव, कोई भी ऐसा प्रोसेस के जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करें और कोई भी एक्शन जो है वो हम क्लास, विद इन द क्लास या आउटसाइड द क्लास अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या अगर हम अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, अपने कंटेंट को अगर किसी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कंडीशन के मुताबिक करते हैं तो वो हमारी बेसिकली एक एक्टिविटी होगी। एनी स्पेसिफिक बिहेवियर और एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, किसी भी काइंड, किसी भी किस्म का हम अगर कोई एक्शन करेंगे, कोई काम करेंगे अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिकली जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड होते हैं और हम इसी तरीकाकार से अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बेहतर अंदाज में सिखाते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। Meaning of activity based learning: an activity or activities used in an educational process to make students learn। यानी आप कोई भी अगर विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, कोई स्टूडेंट्स को काम करवाते हैं जिससे वो अपने कॉन्टेंट्स को, अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को अगर लर्निंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। जी मैम नेक्स्ट कर दीजिए। आज हिस्ट्री ऑफ ये एक्टिविटी हिस्ट्री बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कोई बहुत ज्यादा जो है वो ओल्डर मेथड नहीं, टीचर्स सेंटर जो मेथड था। जी मैम, ABL started sometimes during World War II. हिस्ट्री में बेसिकली हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उस वक्त और उसको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स क्लासेस के स्टूडेंट्स या स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ के स्टूडेंट्स, उनको जो है वो ट्रेन करने के लिए और उनको जो है किसी कॉन्टेंट्स को समझाने के लिए ये परफॉर्म करवाए गए थे। मैम उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जी मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ABL: ड्रामेटाइजेशन, क्विज़ेस हैं और ग्रुप डिस्कशन। हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म अगर कर सकते हैं तो हम इन 3 बेसिक रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और एक्टिविटी के अंदर बेसिकली यही होगा कि हम अगर कोई क्विज़ेस परफॉर्म करवा लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा लेते हैं, तो वो भी बेसिकली हमारे पास आजकल इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर हम लोग, आपने देखा होगा कि जो है वो ग्रुप डिस्कशंस किसी टॉपिक पे करवाई जाती है, तो वो एक बेस्ट एक्टिविटी भी होती है और लर्निंग के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट भी जो है वो क्रिएट करती है। नेक्स्ट जी, एजुकेशनल गेम्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आजकल एक बहुत बेस्ट मेथड है जिसमें हम लोग ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई टास्क दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, वो उसको सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज अगर परफॉर्म करते हैं
तो वो बहुत बेहतर होता है और इस तरह वो जो है वो लर्निंग के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं इसको थोड़ा वाइंड अप कर देता हूँ, काफ़ी स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको कंक्लूजन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो है वो उनके लिए भी जगह बन जाए। तो बहरहाल एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो है मैं बहुत फेवर में उसको मैंने टॉपिक्स को सिलेक्ट किया था। एक्टिविटी की बेस पे बेसिकली साइंस के जो टॉपिक्स हैं, साइंस के जो कंटेंट्स हैं, सिलेबस है, उसको जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो हम अगर करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, अपने नेशनल करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं या अगर प्रोविंशियल जो है वो हम अगर करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक बहुत बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए एज कम्पेयर के तौर पर एक बेसिकली लीडर के तौर पे वर्क कर रहा होता है, लेकिन एक्टिविटी क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स है वो कंट्रीब्यूट कर। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे यहाँ खत्म करना चाहूँगा क्योंकि टाइम की कमी भी है और उसके प्रेजेंट करना होगा, तो मैंने स्लाइड्स तो काफ़ी बनाई हुई थी, लेकिन बस ये कि मेरा जो मकसद था एक्सप्लेन करने का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। जी मैम, बस क्लोज कर ताकि दूसरों के लिए भी चांस बन जाए, टाइम कम है ना। Right. Thank you, Miraj. Uh, uh, it was very nicely wrapped up very fast. Okay, thank you. And who's next? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कौन है अब नेक्स्ट? जी हेलो। जी जी हेलो। I think Miraj, आप you can mute now because I think आपकी presentation over हो चुकी है ना? Or you want to say something? जी नेक्स्ट जो प्रेजेंट अगर करना चाहें तो वो देख लें। Okay, thank you, Miraj. I think we can have the next presentation now. I think it was a very short and sweet, good presentation, and thank you. Can we have the next presentation, please? All right. Okay, I have stopped presenting also. Who's next? Hello. Can you all hear me? जी मैम सुन रही यस मैम। Yeah. जैनब नईम का नाम है नेक्स्ट, अगर अगर वो नहीं है तो मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। जी अगर जैनब नहीं है तो प्लीज गो अहेड। मैम जैनब का नेट इशू है। ओके, सो आई थिंक देन जो रह जाता है वो फिर कल प्रेजेंट कर दे नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो है वो आज वी कैन हैव द नेक्स्ट वन। हु इज नेक्स्ट? मैम इट्स मी सादिया। ओके सादिया, प्लीज गो अहेड। सादिया के बाद कौन है और कोई बाकी है आज? जैनब निज़ार वो ऑलरेडी जैनब निज़ार कर ऑलरेडी चुकी हैं, प्रेजेंट कर चुकी है। मिराज कर चुके, और आयशा इकबाल कर चुकी, सायरा विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास, अमात कर चुके। ओके, तो सादिया इज द लास्ट प्रेजेंटर और उसके बाद वी विल हैव बुशरा। इजारा भी, आई थिंक इजारा का भी कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है, तो अगर इजारा कर सकेंगी तो ठीक है, अदरवाइज वी विल हैव डायरेक्टली हैव बुशरा अंजुम एंड देन वी विल एंड अप। ठीक है, सो लेट्स हैव सादिया एंड देन वील हैव इजारा और बुशरा, whoever is available. ओके, मेरा टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ करिकुलम देख लेते हैं। It is the core of educational system and complete institutional environment incorporating all the courses and activities. करिकुलम जो है वो एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट है जिसमें सारे कोर्सेज आते हैं, वेरियस एक्टिविटीज आती है विच आर गोइंग ऑन इन एजुकेशन सिस्टम्स। तो करिकुलम जो है वो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एन एजुकेशन सिस्टम। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन है। Definition देखते हैं। Subject centered curriculum revolves around a particular subject matter or discipline such as mathematics, literature or biology. This model of curriculum tends to focus on the subject rather than the student.
तो ये इसमें जो है वो जो मेजरली बात की गई है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टीच ओनली द सब्जेक्ट नॉलेज टू द लर्नर्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। तो इसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस के आ जाते हैं, मैथमेटिक्स के आ जाते हैं, लिटरेचर और बायोलॉजी आते हैं। मैथमेटिक्स ऐसे आ जाता है कि हम जो है वो क्लास में स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ाते हैं, सॉरी ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, अलजेब्रा पढ़ाते हैं, फॉर्मूलाज हम बच्चों को बता देते हैं, को याद करवा देते हैं, बट ये किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो करिकुलम डिजाइन किया जाता है जो टोटली सब्जेक्ट की नॉलेज पे फोकस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज मेनली सब्जेक्ट, मतलब ये जो है ये कंटेंट या सब्जेक्ट बेस्ड होता है। इसमें लर्नर्स के जो इंटरेस्ट हैं उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे अगर सपोज करें कि अगर मुझे 6 क्लास का जो है वो करिकुलम डिजाइन करना है, तो मैं ये देखूंगी कि जो क्लास के बच्चे हैं उनको जो है वो सब कुछ पता है, जो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं जो करिकुलम करना चाहूँ वो चीज़ के क्लास भी वही थर्ड है in this design everybody have to make adjustments as per the curriculum। तो ये करिकुलम क्या है? What just happened? Adia, is it the problem at your end or it is at my end? Okay. I can view as Ma'am, I have no idea. Okay, अब चलें ठीक है। वापस करें। Okay. Okay. जी, just a second। तो मैं बता रही थी कि ये करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि टीचर्स को भी जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है और लर्नर्स को भी जो है एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब क्लास बेस्ड या डिसिप्लिन बेस्ड जो है ये करिकुलम हो जाता है इस तरह से। Problems occur with the student engagement and motivation and cause students who are not responsive to fall behind। इस तरह का करिकुलम जो है वो बच्चों का इसमें एंगेजमेंट या मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है और जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर पाते वो चाहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता करिकुलम के अकॉर्डिंग। टाइम रिजिड एंड एवरीवन Time rigid and everyone is followed. It's a type of traditional method in which teacher is solo owner। तो ये एक तरह से rigid होता है most of the time and is a traditional method of curriculum design but teacher is a sole owner। मतलब जो टीचर है वही सब कुछ है, he is a facilitator। तो टीचर ने जो बात कह दी वही सही है। इसमें मॉडिफिकेशन भी जो होगी वो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होगी, नॉट ऑन द लर्नर्स इंटरेस्ट। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर उन्हें फील हो रहा है कि पर्टिकुलर क्लास में अलग करिकुलम होना चाहिए और हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो ही वो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू को तब भी नहीं देखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट की डिमांड देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। मेरिट्स पे आते हैं। फर्स्ट है कि टीचर कैन डू एडवांस प्लानिंग, मतलब यूनिट प्लानिंग कर सकते हैं टीचर्स एडवांस में और लेसन प्लानिंग भी कर सकते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिकली हो। सेकेंड है सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। टीचर जो है इसमें he can take the textbook support। मतलब अगर कुछ easy to give every book knowledge। इसमें यह है कि टीचर कोई भी नॉलेज जो है वो इजीली डिलीवर कर सकता है क्योंकि थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं सिर्फ इसलिए। इट हैज सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग द नॉलेज। सिंपल से जो ये करिकुलम डिजाइन है इस तरह से किया जाता है कि सिंपल पहले बच्चों को आइडियाज दिए जाते हैं और फिर फर्दर उन्हीं आइडियाज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज डिलीवर कर दी जाती है। डिमेरिट्स पे आते हैं तो फर्स्ट है नैरो मतलब ये करिकुलम ही नैरो होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट पे बेस होता है एंड इट हैज नो स्पेस फॉर एक्टिविटीज एंड नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर कैन गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। सेकेंड है यूनिफॉर्म। इसमें जो है वो रिजिडिटी होती है, मतलब चेंज लाना मुश्किल होता है। सब स्टूडेंट्स को एक ही तरह का नॉलेज जो है वो दिया जाता है
वो कैपेबल हो या ना हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो सबको जो है वो सेम ही नॉलेज डिलीवर की जाएगी, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस और नीड्स। सबकी जो है वो एबिलिटीज होती हैं, वो जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट होती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो नहीं होता है। इसकी यही डिसएडवांटेज है। एग्जाम डोमिनेटेड होता है, मतलब स्टूडेंट को जो है वो ही शुड ओनली पास द एग्जाम, कोई स्किल नहीं सिखाई जाती, बट वो सिर्फ रट्टा लगवा दिया जाता है और स्किल डेवलपमेंट की तरफ उनका कोई अटेंशन नहीं होती है। ओवरलोडेड होता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक जो है वो लोग कहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, और बच्चों को मतलब 10 से उस पर बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया जाता है। 10 से 20 बुक्स होती हैं, मतलब इतनी बहुत ज्यादा बुक्स होती हैं जिससे उसकी इंडिविजुअलिटी इफेक्ट हो जाती है। लास्ट है अनसाइकोलॉजिकल। इसमें ये होता है कि अनसाइकोलॉजिकल का ये मतलब है कि जो करिकुलम डिजाइन होता है वो बच्चे की स्टूडेंट की नीड्स की बेसिस पर नहीं होता है, ना ही उसकी एबिलिटीज की बेसिस पर होता है। लेकिन अगर स्कूल में अगर गाइडिंग काउंसल्स हो जाए तो उसके थ्रू जो है वो पोटेंशियल और एबिलिटीज देख के बच्चों की फिर करिकुलम डिजाइन किया जा सकता है। तो ये भी इस तरह एक तरह से इसका डिमेरिट्स में आ जाता है। दैट इज ऑल, थैंक यू। All right, thank you, Sadia. Do we have? It was good. I think it's going good now that we are going a little shorter because अब थोड़ा time भी ज़्यादा हो गया है. तो can we have some Bushra or Izara to present? Yes, ma'am. Okay, Bushra, please go ahead. मैम आप स्लाइड ओपन कर रहे हैं? मुझे present करनी है आपकी slide? यस मैम। All right, कर just give me a दीजिए। minute. मैं कर देती हूँ. Just give me a minute. Okay, Bushra. A second. Okay. Just 2 minutes. I'm putting up. ओके मैम। Okay. I hope that we have time and we would be able to complete this in this. Okay, just a minute. Nine. Okay, so we have 10 minutes. Bushra, do you think that they will be enough for you? यस मैम। All right, ठीक है. चलें, let's begin. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बुशरा अंजुम। मेरा जो टॉपिक है आज का है वो सिलबैक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो मैम। अब नहीं कर सकती, पहले बोलती मैं यहाँ से करना है। मैम है भी यही। जी बुशरा, I'm here. I'm trying to change the slides for you, but I think आप कौन सी slide पे जाने का कह रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. Can't you see the slides? मैम नेक्स्ट स्लाइड। You want introduction or you want skill back model of curriculum वाली slide? इंट्रोडक्शन। जी, I'm already on introduction. Can you ये see? तो टाइटल पे इंट्रोडक्शन। यस मैम। I'm already on introduction, Bushra. ठीक है, अब नो करें? मैम या शो या अब शो है। ओके ओके मैम, अब शो है। ओके, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अच्छा सबसे पहले करिकुलम का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। करिकुलम होता क्या है? करिकुलम की जो करिकुलम जो एक होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि वो एक बच्चे को सही तरीके से पढ़ा सकें, और जो करिकुलम जो है जो प्लान जो बताए जाते हैं वो बच्चों में इस तरह तरतीब दी जाती है कि उसमें दिलचस्पी को देखते हुए स्कूल के डायरेक्टर जो है करिकुलम प्लान करते हैं। करिकुलम का यही मकसद होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
Ma'am, slide next, please. Hello, ma'am. Yes, Bushra, can you hear me? Yes, ma'am. Next slide, Now please. listen, I have changed the slide, but I think आपके यहाँ थोड़ी देर से हो रही है वो slide change. तो आप अपनी next slide के हिसाब से you start presenting and by the time it will change. क्योंकि यहाँ change हो रही है लेकिन वहाँ आपको नजर नहीं आ रही. तो वो network issue की वजह से हो रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. Can everybody see the I slide think, 3? okay. No, ma'am, the Next, introduction Ma'am, slide no, is no. on this. अच्छा, okay. हाँ, I think मुझे ये projection बंद करके I'll just okay, put ma'am, up. मैं जो हूँ फिर Okay, ठीक है. Can we now see the third slide? Sorry, this one. Yeah. Yes, ma'am. All right, चले. मैम मैं Bushra, are ओपन we कर fine लेती now? हूँ. ओके ओके. या मैम. नो मैम, मैंने अपनी ओपन कर ली है Great. पीपीटी. आप मुझे मैं उसी कहती थे हिसाब से I'll keep देती हूँ. ओके. changing. हाँ, हाँ, but जी जी वो जी. ओके मैम. आपको थोड़ा देखने में देर सिल हो बैक. जाएगी. ओके. सिल बैक मॉडल ऑफ करिकुलम. अच्छा, सिल बैक जो थे इन्होंने जो है अपने करिकुलम को जो है कब उन्होंने ये कब बनाया? उन्होंने बनाया है 1976 को. ये सिल बैक ने जो ना अपना करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल को बनाया है. अच्छा ठीक है. सिल बैंक जैसे हर वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, इसी तरह इनका भी सिल बैंक का भी जो है ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था. वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस टीचर ने जिस क्लास में जो मजमून पढ़ाना है वो उसी हिसाब से बच्चे के करिकुलम को खुद डेवलप करे. और स्कूल लेवल के करिकुलम बनाने में सिल बैक मॉडल जो है उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी ली है कि वो स्कूल लेवल के करिकुलम बनाएं. और टीचर पे ज्यादा उन्होंने जोर दिया था कि टीचर ने बच्चों की एक्सपीरियंस को देखते हुए और लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए ही करिकुलम डेवलप करें. ठीक है. अच्छा, इस मॉडल ने ये जो मॉडल है हमारे सिल बैक मॉडल जो है इन्होंने जो है एक क्लेम भी किया था. वो क्लेम था CBCD. अच्छा, CBCD बेसिकली है क्या? ये है स्कूल बेस्ड करिकुलम डेवलपमेंट है. इसमें ये बताया कि स्कूल बेस के अकॉर्डिंग ही हम इफेक्टिवली जो है ना वो करें और मतलब करिकुलम डेवलप करें. और इस मॉडल ने करिकुलम डेवलपमेंट में 5 स्टेप भी बताए हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. ओके. सिल बैक. ठीक है. सिल बैक मॉडल जो रिलेट करते हैं कल्चर से रिलेट, जो कि हमारी सोसाइटी में क्या डील हो रही है, हमारी सोसाइटी में क्या चीजें हो रही हैं, इसमें गौर व फिक्र करना है. इस पर जो है टीचर जो है मॉडिफाई करें. स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के किसके जरिए करना है? वो इस तरह करना है कि वो अपने फ्रेमवर्क के जरिए करें, कल्चर के जरिए और सिंबॉलिक सिस्टम के जरिए करें. और इसी बिना पे वो अपना करिकुलम जो है ना वो डेवलप करें. ठीक है. और उसके बाद ये कहा जाता है, इसका ये मानना था कि ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव जो हो गया है कि इसमें टीचर ने बच्चों की एक्सपीरियंस को देखना है और कल्चर को देखना है, फ्रेमवर्क को देखना है. असल में जो है ना ये ना दो वर्क करता है. ये 2 जगह पे काम करता है. एक ये कर रहा है प्रोसेस मॉडल और दूसरा है ऑब्जेक्टिव मॉडल को. ठीक है. अच्छा, इसमें ये आसानी है कि इसमें हम चेंज कर सकते हैं. इस करिकुलम में हम चेंजेस कर सकते हैं. अगर इसमें हम कुछ भी तब्दील करना चाहें तो इसको हम बासानी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम. अच्छा, जो स्टेप ये 5 स्टेप्स सिल बैक मॉडल के जो है वो ये थे. सिचुएशन एनालाइज. इसमें 2 तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं. एक है एक्सटर्नल एनालाइज, एक है इंटरनल एनालाइज. अच्छा, उसके सेकंड स्टेप है ऑब्जेक्टिव. थर्ड है डिजाइनिंग प्रोग्राम बिल्डिंग. नंबर 4 है इम्प्लीमेंटेशन और नंबर 5 है एवेल्युएशन. एवेल्युएशन में जो है ना मॉनिटरिंग भी आ जाता है, फीडबैक भी आ जाता है, असेसमेंट भी आ जाता है एंड रिकंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, इसी में इंक्लूड है. अच्छा, अब हम आते हैं जो सिल बैंक का मानना था कि इसने जो 2 चीजें वो 2
जो इसने जो 5 जो स्टेप्स दिए उसके फर्स्ट स्टेप में हम आते हैं सिचुएशन एनालिसिस। उसकी दो जो फेज हैं उसमें बताए हैं सिलबैक में, एक है एक्सटर्नल एनालाइज और सेकंड है इंटरनल एनालाइज। मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल एनालाइज को डिफाइन करना चाहती हूँ। अच्छा, एक्सटर्नल एनालाइज जो है इसमें जो चीजें आती हैं वो सोसाइटी और कल्चर से रिलेट चीजें होती हैं कि मतलब क्या चीज हमारी सोसाइटी और कल्चर में चल रहा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सब चीजें करनी है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, हमारी जो है एक्सपेक्टेशन होते हैं, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कम्युनिटी के वैल्यूज होते हैं, और इसमें जो है ना रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो अडल्ट हैं एंड चिल्ड्रंस, और आइडियोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड चेंज भी हो सकता है, पॉलिसी सिस्टम स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन एंड प्रोसेस भी हो सकता है। अच्छा, करिकुलम प्रोजेक्ट एजुकेशन रिसर्च भी हो सकती है। द चेंज नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी थाउट द अच्छा, इसके अंदर जो है जितनी भी ये चीजें इसमें बताई गई हैं ये सब जो है एक्सटर्नल के उसमें इंक्लूड होती हैं। अब हम आते हैं इंटरनल सिचुएशन एनालाइज। इंटरनल सिचुएशन एनालाइज असल में ना पीपल टीचर चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। पीपल का एटीट्यूड है, इनके जो एबिलिटीज है, इसको डिफाइन एजुकेशन एंड नीड, क्या क्या जरूरियात है इनकी। ठीक है, इन सब चीजों जो है ना, एक चीज ध्यान में रखें कि एक्सटर्नल बैरोनिक चीजें होती हैं जो भी हम स्कूल के करिकुलम के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं, और इंटरनल होती है अंदर की चीजें। ठीक है, एक्सटर्नल बाहर की चीजें। अब इंटरनल में चीजें जो आती है, पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स आ गए और टीचर्स आ गए, दो चीजें। अच्छा, जितने भी इंटरनल चीजें होती है हमारे करिकुलम में जो है, जिन चीजों की नीड होती है वो रखी जाती है कि वो क्या फायदा दे सकती हैं और क्या नुकसान दे सकती हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव है। सिलबैक मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट ने जो डिसीजन इसमें जो दिया है, वो डिसीजन मेकिंग का रोल जो दिया था वो हमने टीचर को और स्टाफ को दिया है। ठीक है, इसमें